So 11, go ahead. Solutions of magnesium nitrate and barium nitrate separately undergo a series of reactions. M, N, and P are magnesium compounds. Q, R, S are barium compounds. How many of M, N, Q, P, Q, R, and S are white precipitates? Magnesium nitrate, magnesium carbonate, magnesium chloride, and magnesium hydroxide. So 2 here. And then barium carbonate, barium chloride, and barium hydroxide. Barium carbonate, 1, 2. Barium carbonate, barium chloride, barium hydroxide. I don't know. Barium carbonate. Barium carbonates. I figured out 2 of them. I'm confused about barium. Like magnesium carbonate is insoluble and magnesium hydroxide is insoluble. But barium can't. We just discussed that barium hydroxide is also soluble, and we know barium chloride is soluble too. So the last thing you need to figure out is barium carbonate. Now, your basic IGCSE knowledge tells you that only 3 carbonates on the planet are soluble: sodium, potassium, and ammonium. So barium carbonate is definitely insoluble, which gives you the answer. B. Seems to be right. Check करना हो तो बेशक कर लीजिएगा, but I think that is correct. Okay. L, M, and N are group 2 metals and react more vigorously with dilute hydrochloric acid than N does. NOH2 is more soluble than NOH2. What could be the identities of L, M, and N? Reacts more vigorously with dilute hydrochloric acid than N does. And OH2 is more soluble. Barium hydroxide. NOH2 is more soluble than NOH2. Solubility. This is down the group. Hydroxide solubility, it increases down the group, and sulfate decreases. Solubility. More soluble. So B. B. कैसे पता चला? Solubility First, of you're right. hydroxides. Okay. Solubility of hydroxide, they become more soluble down the group. Right, which means कि N नीचे है ग्रुप में, sorry, M नीचे है ग्रुप में, N ऊपर है, कि MOH2 soluble है. Okay. So calcium or calcium का पता चल गया, and then फिर barium का खुद पता चल जाता है because it reacts more vigorously with dilute hydrochloric acid. Then calcium or strontium. Okay, that's right. Moving on. Number 30. A 4-gram sample of an anhydrous group 2 metal nitrate is heated strongly until there is no further exchange. A solid residue of mass 1.37 grams is formed. Which metal is present? Metal nitrate is heated strongly until a solid residue of mass anhydrous group 2 metal.
Metal nitrate acetate. And then इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बनती है। ठीक, you're starting with 4 gram sample and you're getting mass of 1.37 for a solid residue, and only this one is solid since this one is a gas and this one is a gas that don't qualify. So he's trying to say you're starting off with 4 grams of this and getting 1.37 grams of this, right? अब अगर आप इन सारों के नाइट्रेट्स के एमआर कैलकुलेट करेंगे और सारों की बाकी चीजें भी कैलकुलेट करते चले जाएंगे, दिस इज गोइंग टू बी समवट अ लॉन्गर स्टेप। ठीक है, इसका थोड़ा सा आसान तरीका ये है कि हम इन दोनों को कंपेयर करें बस। ठीक है, तो ऐसा करें कि एक का एमआर दूसरे का एमआर आपस में रेशियो ले लें, फिर अगले के लिए रेशियो ले लें। अगर आपकी किस्मत बहुत ही बुरी हुई है ऐसे डी तक और आंसर डी होता हुआ, तो आपको ये वाला तरीका भी पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी किस्मत थोड़ी सी बेहतर हुई, आंसर एबीसी में से हुआ, तो आपको वो आंसर पहले मिल जाएगा। रिमेम्बर, इन दोनों की रेशियोज और इनके एमआर की रेशियोज एक जैसी होगी। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, ठीक है, बेरियम नाइट्रेट के लिए रेशियो बेरियम ऑक्साइड के लिए जो हमारे पास मैसेज बनते हैं, इस एमआर की रेशियो और इस एमआर की रेशियो वही होनी चाहिए जो इसका आंसर आता है। ठीक है, या कैल्शियम नाइट्रेट के लिए, ठीक है, CaNO3 ट्वाइस, और कैल्शियम ऑक्साइड के लिए एमआर रेशियो एमआर वही होना चाहिए जो इसका आता है, इसकी रेशियो का आंसर आता है। One of these would be correct, and I highly doubt strontium. I don't know what the answer is, but I don't think that's strontium. But actually, to be honest, strontium and magnesium दोनों पे मेरा doubt है. Try it. Try it this way. First, divide 4 by 1.37. The answer you get is 4 divided by 2.91, 2.92. 2.92. हम इसे round off कर लेते हैं 2.92. ठीक है? Then if you take out the MR of barium nitrate and barium oxide, इसका आंसर देख लें divide करके। इनके MRs निकालें और बस इसे divide कर दें। Barium nitrate is 261.3. 261.3.
And barium oxide is 153.3. इसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. The answer is not going to be 2.92. ये तो हमें पता है. Because 153 into 2 is equal to 300. चलें अगले पे चलें. सिंपलर Calcium टेक्निक nitrate बनाने का फायदा ये होता है कि आप बीच में से बहुत सारे स्टेप्स स्किप कर सकते हैं. लाइक दिस वन. मेंटल मैथ टेल्स अस डिफरेंटली. ठीक है जी. calcium nitrate is 164.1 and 164.1. oxide is 56.1. And the answer is 2.92. 2.92. ये वाला. ठीक है तो ये वाला. ठीक. Okay, sir. अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि ये इस तरह का एक क्वेश्चन एक इस चैप्टर की बात नहीं है. ये एक बेसिक मोल्स क्वेश्चन है जो रिलेट इस चैप्टर से हुआ है. पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस यूं हो सकते हैं. अब क्लियरली ये आइडिया आपको बता देता होगा कैसे हमने इन्हें मैच करना है. ठीक है. रेशियो ऑफ 1 कैन बी सिमिलर टू रेशियो ऑफ 2. ठीक है. Yes, sir. और लंबे तरीके से नहीं जाना. लंबा तरीका बहुत खतरनाक होता है, स्पेशली एडवांस्ड के एमसीक्यू पेपर के लिए. You always need to find up a shorter method. ठीक. Yes, sir. Okay. मैंने रेज कर दिया. Is that okay? Do I need to? Yes, sir. नहीं मैंने कॉपी कर लिया. Okay, great. Moving on. 14. In which row are all statements comparing magnesium and barium correct? Fourth, ionization energy, reaction with water. Reaction with water, magnesium and barium. Barium का faster होगा. And ionization energy, down the group decreases. So B. Correct. B. Good. So out of, you knew in the very start, जैसे जैसे आप सॉल्व कर रही थी, कि A and C are totally incorrect because of reaction with water, तो B and D are correct. तो उससे फिर बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है. ठीक है. 15. Sample of anhydrous calcium nitrate is placed in a test tube and heated in a roaring Bunsen flame until it decomposes. The description of the gas in the test tube is then noted. A glowing splint is then put into the test tube and any changes are noted. Which observations are correct? Anhydrous calcium nitrate is first reduced to until it decomposes. The description of the gas in the test tube is then noted. Glowing splint is then put into the test tube and any changes are noted. Calcium oxide plus for NO2 plus O2. So the splint the glowing splint relights in the presence of oxygen, and NO2 is, I think, a brown gas. So B. Correct. Good. Since I just did that and we know it's going to give two gases, NO2 and O2, O2 की वजह से स्प्लिट रिलाइट करेगा, लेकिन O2 का अपना कोई कलर नहीं होता, कलर डेफिनेटली NO2 का आएगा and that's brown. ठीक है. So moving on. 16. Yes, sir. Which statement explains the observation that magnesium hydroxide dissolves in aqueous ammonium chloride but not in aqueous sodium chloride? The ionic radius of the ammonium ion is similar to that of magnesium but not that of sodium ion. NH4Cl dissociates less fully than NaCl. The sodium ion and magnesium ions are isoelectronic. They have the same number of electrons. NH4 ion can donate a proton. Ionic radius of is similar to that of, I think मुझे D सही लग रहा है for some reason.
रीजन नहीं समझ में आ रही है? You're right. D is correct. Really? Yes, D is correct. आप D कह रहे हैं ना? The NH4 Yeah. positive ion can donate its proton. जी. Okay. आपको याद अभी अभी हमने कुछ टाइम पहले बुक ओपन की थी और मैंने आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए solubility वैल्यू दिखाई थी जो 10 raised to power minus 7 या 5 कुछ इस तरह से था, बट हर Yeah. 10 raised to power minus में था, right? Yes, sir. Which means it's pretty much insoluble, which means if something is insoluble, it's never completely insoluble. Actually, it makes a dynamic equilibrium with the little bit amount of it that tends to dissolve in water. ठीक है? तो basically हमारे पास ये हो जाएगा, right? Now this acts as a dynamic equilibrium और इसके ऊपर Lee-Chatelier principle apply होगा. The clever thing over here is कि इसमें अमोनियम क्लोराइड के अंदर ये डिसॉल्व होता है. क्यों? क्योंकि ये उसे प्रोटॉन देता है. जब ये उसे प्रोटॉन देगा तो ये प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस कर देगा? वाटर. जब ये वाटर प्रोड्यूस करेगा हम एक प्रोडक्ट निकालते जा रहे हैं. And decreasing the concentration of the product takes the reaction to forward direction, which Yes, means sir. D is correct. I don't know for some reason, for what reason you were having your hunch upon D, but that hunch was correct. But I hope now you understand why it is correct. Yes. Yes. Good, good. Moving on. When 3 grams of an anhydrous nitrate of group 2 metal is decomposed, 1.5 to 3 grams of gas is produced. What is the nitrate compound? ये वैसे ही सॉल्व करना है ना जैसे भी हमने ऊपर किया था. But this time they're talking about gases. Yes. Which So means आपको it could eat हाँ, थोड़ा सा differently nitrate. put up करना है. Yes. 1.96. What is the nitrate compound? Okay, MR5 इसमें से ज्यादातर के MRs तो आपने किए होंगे फाइंड आउट, राइट? बेरिलियम को छोड़ के बाकी के किए होंगे. जी. So it shouldn't be a problem. ये क्वेश्चन पिछले वाले से ज्यादा आसान है. कैसे? I'm gonna do a little bit of this. एक सेकेंड, मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी तरह मैं पिछले वाला पोर्शन निकाल लूँ. Yeah, great. I have it. I have it right here. ठीक है? I hope you can see it all. Now, this time it's a little bit different. We're talking about this. ठीक है? NO2 के मोल्स 4 मोल्स, ठीक है, इसके और ऑक्सीजन का 1 मोल, इस सारे का मास और इसका मास, इस सारे की तरतीब देखनी है. So basically now this time you are talking about 2MnO3 twice ratio this whole thing 4NO2 plus O2, इस सारे को रेशियो करना है आपने. तो जो भी आप यहाँ से नाइट्रेट निकालेंगे उसके MR को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 ऑफ दैट MR, ठीक है, रेशियो. ये हमारा फिक्स वैल्यू है. फिक्स वैल्यू के होने की वजह से क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया. ठीक है? और 1.53 और 3 का मतलब ये है, अगर ये 1.5 होता तो ये पूरा 2 होता. सो इट्स 1.9 समथिंग, मे बी 96, मे बी 97, व्हाटएवर. जी 96. 96, ठीक है. तो कम आ रहा था मैं भी. सो closer guess would give you that. So 2MR should be equal to what? NO2 is what? O2 होता है 32. Let's go with this. और ये 32 plus 14 is equal to 46. 46 into 4 is equal to what? 184. If I am right, this all should end up in 216, right? So this 2MR ratio 216 की तरतीब से आंसर आना चाहिए.
वो किसी का भी आ सकता है। बेरिलियम नाइट्रेट को तो मैंने सिर्फ इसलिए सर्कल किया कि दिस इज द वन यू नीड टू फाइंड आउट, द रेस्ट यू ऑलरेडी नो। यस। अब आपने पता क्या करना है, जो आपके पास डबल से क्लोज हो उसको ट्राई करना है। जो डबल के क्लोज हो। मतलब 1.96 की रेशियो है ना। यस। ओके। सर आपके पास 184 कैसे आया? जी 184 कैसे आया? एमआर? क्योंकि 4 मोल्स ऑफ NO2 है, मैंने ओके। 4 भी लिया है, because the MR is 46 if I'm correct. Nitrogen is 14, oxygen O2 is 32, 32 plus 14 is equal to 46. 46 into 4 is equal to 184. Isn't that correct? यस यस। Okay. क्योंकि गैसेस का पूरा मैथ है और गैस हर मरतबा एग्जैक्टली इतना ही प्रोड्यूस होता है। नोटिस करें गैसेस में मैंने नंबर ऑफ मोल्स कंसिडर किए, तो MR में भी मैंने नंबर ऑफ मोल्स कंसिडर करने to balance the whole thing. Remember, it's fair judgment. What you're doing on the left of the equation, you're supposed to do the same on the right of the equation, or vice versa. अब आप देखें कि मैं हर मर्तबा हर क्वेश्चन के लिए एक नया तरीका उसी वक्त बैठे बैठे डिजाइन कर लेता हूँ। That's what a good A-level student can do. अदरवाइज आप हर मर्तबा एक लंबे फुटब्रिज से होते हुए पहले एक ऑप्शन सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर तक फाइनलाइज करेंगे, and that way you're definitely going to miss a few of your questions because you're going to run out of time earlier than you're going to do your questions completely. जिस तरह से चल रहा है क्वेश्चन, आई डोंट थिंक द स्टार्टिंग आंसर ए कुड बी द आंसर टू इट। तो मैं बी के हिसाब से भी थोड़ा सा डाउट में हूँ, मैं सी के हिसाब से भी डाउट में हूँ, क्योंकि इसका आंसर बड़ा आना चाहिए। आप देख रहे हैं रेशियो 2 है और हम ऑलरेडी 216 पे खड़े हैं। अब हमें बड़ा डबल द MR वैल्यू बड़ी लेनी होगी, अप्रोक्सीमेटली 400 के करीब आएगी तो आंसर आएगा ठीक। वो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम से तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम का मास तो कैल्शियम से भी कम होता है। तो ए और सी तो पॉसिबिलिटी नहीं है। बी और डी में से भी मुझे डी लगता है, बी मुझे नहीं लगता, यस। क्योंकि कैल्शियम भी बहुत ज्यादा मास नहीं है। स्ट्रॉन्शियम पे जाके मास इतना हो सकता है कि आपका आंसर ठीक आ जाए। व्हाट्स द AR टू स्ट्रॉन्शियम? 181.6. To strontium, it is 87.6. 87.6. Since nitrate is 48 plus 14, 62, 62 into 2, 124, 124 plus 87 अभी आपने बोला। Yes, 87.6. 124 plus 87 is roughly equal to 200 and something. The twice would be equal to 400 and something. Yeah, strontium nitrate is definitely the answer. तो मैंने मेंटल मैथ से निकाल लिया।
I can't hear you properly. Are you saying something? Strontium nitrate का 211 mR है. इसके बाद what do we have to do? Strontium nitrate का MR 211 है. Yes. So the twice of that would be 422. राइट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये देखें मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, इस 2 MR को इसके हिसाब से लेना है. So that would be 422, and 422 when divided by 216, the answer would be equal to almost this. Yes. So that's what I was saying. देखें ये 1.96 है ना, इसे मैं राउंड ऑफ करूं तो ये 2 हो जाता, तो I needed a number closer to 432 क्योंकि 216 का नंबर 432 है. So twice of that MR could be the greatest one in the list, and the greatest one is definitely strontium nitrate. Yes, sir. ठीक है. So since मुझे आइडिया है I need the greater one, तो मैं कभी ये कैलकुलेट नहीं करूंगा, ये कैलकुलेट नहीं करूंगा, इन दोनों में से मैं पहले इसे कैलकुलेट करूंगा so that I can jump to the answer as soon as possible. ये कैलकुलेशन करने का मतलब, ठीक है, ये कैलकुलेशन करने का मतलब है so that I can get to my answer as quickly as possible. Apart from being correct, it is to also become quick. You get my point? Yes, sir. Good, good. Can I erase this all? Yes, sir. All right. Great. 18. Trends are seen in the physical and chemical properties of the elements of group 2 and their compounds, which property shows a decrease from magnesium to barium. The rate of reaction between the element and dilute hydrochloric acid, the solubility of hydroxides, the solubility of hydroxides, the solubility of sulfates, the temperature of decomposition of the carbonates. A तो नहीं है, B भी नहीं है. The temperature of decomposition of carbonates. The carbonate is soluble. The carbonate is insoluble. Temperature of decomposition. C या D. Solubility of sulfates decreases down the group. So I think C. Great. बहुत अच्छे तरीके से पहुंचे आंसर में. Temperature of decomposition of the carbonates. Does the temperature increase or decrease? Increase. देखिए कार्बोनेट एक बड़ा आयन है, ठीक है, जब बड़ा आयन किसी बड़े आयन के साथ कंबाइन करेगा तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कॉम्बिनेशन की, और हमें ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा उसे डिकम्पोज करने के लिए. वैसे वर्षा जब हमने वैसे वर्षा नहीं, एक्चुअली ऑन द कॉन्ट्ररी जो हमने पढ़ रखा है एएसनेस के हिसाब से, अगर कोई छोटा आयन हो तो वो कार्बोनेट के साथ इस तरह से कनेक्ट करने की कोशिश करता है कि वो कार्बोनेट को डिस्टेबलाइज करता है बिकॉज ऑफ हैविंग अ हायर अट्रैक्टिव पावर. ठीक है. And because of that destabilization, it actually decomposes a little bit earlier. ठीक है. तो मैग्नीशियम के लिए कम टेम्परेचर चाहिए होता है डिकम्पोज करने के लिए, बेरियम के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, सो द प्रॉपर्टी इंक्रीजेस. ठीक. Okay. Yes. एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट है, आधा हिस्सा है A2 के अंदर. ठीक है. तो मैं आपको बहुत थोड़ा पोर्शन बता पाया हूँ इसके लिए, स्पेशली जो मेरा सेकंड पॉइंट था. ठीक है. क्योंकि वो A2 में बाकी कवर होना है तो हम पूरा यहाँ करवा नहीं पाते, हम बस इतनी डिटेल ही बता पाते हैं. Yes, sir. Okay, moving on. Number 19. Which row correctly describes one property of barium and one property of barium oxide? Observation: barium metal is added to water. pH of solution obtained when a special measure of barium oxide is added to 100 centimeter cube of water. The metal is added to water. Rapid effervescence. A few gas bubbles form on the metal surface. Barium oxide. Barium oxide is added to water.
hydroxides की solubility there and more soluble. Oxides become more soluble. So rapid effervescence is seen, and Good. then pH of solution obtained when a spatula measure of barium oxide is added to 100 centimeter cube of water. Barium oxide is added to water. Barium hydroxide. I think it's alkaline. So 30D. Good. Now, rapid effervescence is something that you can easily jump to. What's confusing over here is in between 8 and 13. Now, 13 is our answer because number one, आपने मेरे साथ इस लेक्सन के शुरू में देखा कि बेरियम ऑक्साइड मोर सॉलेबल है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर हाइड्रोक्साइड, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने उसकी रीजन देखी थी कि बेरियम मोर मेटालिक होता है, ठीक है, और मोर रिएक्टिव भी होता है, सही. तो अगर बेरियम मोर रिएक्टिव या मोर मेटालिक होगा और ज्यादा सॉलेबल भी है तो ऑफ कोर्स इसकी पीएच जो होगी वो टुवर्ड्स बेसिक ज्यादा होगी. रिमेंबर, स्ट्रॉन्गर मेटल्स प्रोड्यूस गुड अल्कलीज और बेसेस, ठीक. तो बेरियम इज डेफिनेटली गोइंग टू प्रोड्यूस समथिंग मोर अल्कलाइन. So more alkaline, closer to 14. Hence 13 is your answer. Make sense? There are many approaches towards getting to the same answer, 13. These are the few points which you can think of before you finalize 13. ठीक? Yes, sir. Good. So I'm gonna erase it and move on to the next one, 20. An excess of magnesium oxide is shaken with water. The resulting mixture is filtered into test tube X. An excess of barium oxide is shaken with water. The resulting mixture is filtered into test tube Y. Which oxide reacts more readily with water and which filtrate has the lower pH? Oxide reacts more readily with water. Oxide reacts more readily with water. Barium oxide. And then test tube with filtrate of lower pH. It's almost filtrate has lower pH. X barium oxide का pH high था, so X magnesium oxide A. Good, good. I wanted you to just re-go through the thing I just told you. So yeah, barium oxide का pH जब water में dissolve करते थे हाइड्रोक्साइड के लिए ज्यादा हो जाता था. तो y तो हो नहीं सकता, x होगा, और अगर x होगा और हम जानते हैं कि ये रेडिली डिसॉल्व करता है, रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो इट मींस a और b में से कोई आंसर है. सो या a इज करेक्ट. गुड. Before we